Assalamu alaikum dear students. This is unit number 7, and in unit number 7 we are discussing the second section of the unit, that is structure of language. And in the structure of language we are going to talk about the future continuous tense. Okay? Future continuous tense is used to talk about an event that has started, or that has started a bit ago when we are talking, and is going on and will be going on in future, कि जिसका आगाज हो चुका है और वो अभी भी जारी है और वो मुस्तकबिल में यानी कि आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी, या फिर एक ऐसा इवेंट कि जिसका आगाज अभी हो रहा है और उसका जो इख्तिताम है वो मुस्तकबिल में किसी नुक्ते पे होगा। एक ऐसे इवेंट के बारे में भी हम इसी टेंस के हवाले से बात करते हैं कि जो कि मुस्तकबिल में उसका आगाज़ होगा और वो मुस्तकबिल में ही किसी पॉइंट पे उसका जाके इख्तिताम होगा। ठीक है, चंद आप एग्जांपल्स देखें। इसमें विल का हम इस्तेमाल करते हैं, विल का और बी गोइंग टू जो है, ठीक है, दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इससे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। ठीक है, चंद आप एग्जांपल्स देखें। आई विल बी विजिटिंग माई फ्रेंड दिस वीकेंड। आई विल बी, विल के साथ आपने क्या लगाया, बी लगाया, और वर्ब आपका था विजिट, तो विजिट के साथ आपने आईएनजी फॉर्म लगा दी। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस बन गया। दूसरा तरीकाकार जो है वो आई इज एम आर, जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है, एम लग गया। गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड, तो चूंकि आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है तो एम लगाया, गोइंग टू लगा दिया। गोइंग टू जो है इट इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस अबाउट द फ्यूचर, एंड देन विजिट माई फ्रेंड के। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, दे विल बी कुकिंग एट 6, दे आर गोइंग टू बी कुकिंग एट 6। अभी गोइंग टू बी वाला जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो रूल्स इसके देखें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल के विल के साथ कैसे बनाया जाता है, तो विल लगेगा, विल के साथ बी लगेगा। ठीक है, आई विल बी, अब वर्ब जो भी होगा उसके साथ आई एन जी लग जाएगा। ठीक है, वेट है तो वेटिंग हो जाएगा, रन है तो रनिंग हो जाएगा, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, जो भी वर्ब है आपका उसके साथ आप आई एन जी वाली फॉर्म इसकी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा तरीकाकार है वो है गोइंग टू के साथ। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज एम आर। ठीक है, उसके साथ गोइंग टू बी लगेगा, गोइंग टू, गोइंग टू या गोइंग टू बी, और फिर वर्ब लगेगा और वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो ये दो तरीकाकार हैं इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को अपना फॉर्म करने के। We can use will or going to create future continuous tense with little or no difference in meaning at all। ठीक है, कि दोनों तरीकों से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और जो मीनिंग्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, मीनिंग्स में कोई खास डिफरेंस जो है वो नहीं होगा। तो अब हम इसके यूजेस पे नज़र दुराते हैं। जो सबसे पहला यूज़ है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर, कि एक ऐसा एक्शन that has not yet started, it will start at some point in future, and it will be interrupted at some point in future, and after interruption it will continue again। ठीक है, कि एक ऐसा एक्शन कि जो कि मुस्तकबिल में शुरू होगा, फिर उस एक्शन के बीच में कोई रुकावट डलेगी और उसके बाद वो एक्शन दोबारा उसका आगाज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स अगर आप इसकी देखें तो आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, कि अब एक्शन कौन सा है, एक्शन इज गोइंग ऑन ऑफ द वॉचिंग टीवी, के उस वक्त मैं टीवी देख रहा हूँ। व्हेन शी अराइव, जो उसका अराइवल है वो इंटरप्शन है, वो मुदाखलत है इस एक्शन के बीच में। आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर बस अराइव्स, आई विल बी वेटिंग, अब वेटिंग जब एक मतलब कि पैसिव एक्शन है जो कि अभी नहीं हो रहा, मुस्तकबिल में किसी पॉइंट पे इसका आगाज होगा और ये जारी होगा जब बस पहुंचेगी। आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग एट बेस्ट वेस्टर्न होटल इफ यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, अब नीड टू कॉन्टेक्ट वाला जो चक्कर है ये इंटरप्शन है, और staying जो है बेस्ट वेस्टर्न पे, it is the action that will start at some point in future and will be going on when it will be interrupted. The second use of the future continuous tense is specific time as an interruption.
So as we had said in the use one, the future continuous is interrupted by an action. However, you can also use a specific time as an interruption. Tonight at 8 p.m. I am going to be eating dinner. ठीक है, तो इसमें अगेन सेम ही चीज़ है, ठीक है, ये कोई खास डिफरेंस जो है वो नहीं है यूज़ वन और यूज़ टू के बीच में। यूज़ थ्री पर आप आ जाएं, पैरेलल के दो, मतलब कि पैरेलल एक्शंस जो हैं इन फ्यूचर, उनको रेफर करने के लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। So when you use the future continuous with two actions in the same sentence, it means that both actions will be happening at the same time. So these are parallel actions, कि वो चीज़ें जो कि बैक वक्त हो रही होती हैं उनको हम कहते हैं parallel, ठीक है। So when we are talking about two actions in the same sentence, it means that these two actions, they will be going on simultaneously or at the same time. For example, I am going to be studying while she is making dinner. While Sabine is reading, Talal will be watching television. अब two actions हैं, both of the actions they are happening at the same time, they are happening simultaneously. Tonight they will be eating a dinner, discussing their plans and having a good time. So all these things they will be happening at the time of eating dinner. Obviously, when we are eating, we can talk. So they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time. The fourth use of this future continuous tense is to talk about the atmosphere. At, by atmosphere, we do not mean weather, rather we mean the condition. जैसे माहौल कहते हैं, कमरे का माहौल, ठीक है, कि what will be happening around. So we use this tense to talk about the atmosphere or most probable condition of a house or of individuals when we will be arriving there. Okay, so let us look at the first example. When I arrive at the party, it means when I arrive means that when I will arrive at the party, everybody is going to be celebrating. So all people will celebrate when he'll arrive. Some will be dancing, others are going to be singing, a few people will be eating tikkas, and some people are going to be talking. Okay, so these are the things that will be happening when he arrives at the party. So here is an exercise, and in this exercise you have to use the correct simple future and future continuous tenses in the following short dialogues. Now you have to decide whether you will use the simple future tense that you learned in the previous unit, or you will have to use the future continuous tense. Okay, so let us give a reading to this dialogue. So look at the question. First of all, it is in the future. uh, where is Tamina going to meet us? Okay, it is future simple. She dash wait for us when our bus arrives. She will be waiting. Okay, she will be waiting for us when our bus arrives. I am sure she stand on the bus stop when we reach there. She will be standing. Okay, it is future continuous tense we are talking about, because these actions they will be going on. Okay, they will start in future at some point and they will be going on at the point when Sadia and Maria they reach at the bus stop. Okay, okay, the next sentence, Sadia says, and then what? Maria says, we go to her house and have lunch. अब ये simple future लगेगा, ठीक है, we will go to her house and have lunch. Second dialogue है Talha. He says, when we get to the party, Jamil watch dash TV. अब ये will be या will be होगा, ठीक है, will be watching. Okay,
will be watching TV. Sami will be making kebabs. Bilal will be sitting on the computer, and Tahir will भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप वैरायटी के लिए लिख सकते हैं, सॉरी ये will be sitting. तो ताहिर is going to be complaining. ठीक है, ताहिर is going to be complaining about his day at work. Rashid कहता है maybe this time they won't be doing the same things. I am absolutely positive they do the same things. They will be doing. Okay, are going to be doing भी हो सकता है, लेकिन ये कि will be doing जो है वो ज़्यादा appropriate लग रहा है यहाँ पे. The same things, they always do the same things. Okay, there are two more dialogues, and since I have solved two dialogues for you, so these dialogues, they are an activity for you that you have to do yourself. So let us have look. Oh, look at the mountain of dirty dishes. Who wash all of those? Who will wash all of those? Okay, that is a question. It is in the simple future. I promise I do them when I get home from college. अब आप देखें that whether you have to use the future continuous tense or you will have to use simple future. अगर simple future होगा तो will do लगेगा, and if you have to use the future continuous then will be doing लगेगा. ठीक है, तो decide के will do लगाना है और will be doing लगाना है. Famida says thanks. Jamila says when you get home this afternoon from your college, that mountain will be gone and nice stacks of sparkling clean dishes place in the cabinets. Will be placed होगा या will placed होगा. ठीक है, so you have to decide. फोर्थ डायलॉग है इफ यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी नेक्स्ट वीक आई स्टे. अब ये वही है जो कि ऊपर डायलॉग आया था, आई विल बी स्टेइंग ओके एट होटल हॉलीडे इन. आई कॉल डैश आई call dash you if there are any problems. I will call you. Okay, yeah, I will be calling you if there are any problems. I will be calling you ज़्यादा appropriate लग रहा है. This is first time I have ever been away from family. Don't worry, they will be या they are going to be. Okay, दोनों लग सकते हैं. Fine. So that is the end of future continuous tense. I hope that you have understood it. I am thankful to you for listening to this video.